I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham. Today I will give lecture on central orbit, Mathematics Paper 3 Dynamics. We will do elliptic orbit. A particle moves in an ellipse under a force which is always directed towards the focus. To find the law of force, the velocity at any point of its path, the periodic time, and law of force. For the three things we will find out. Particle moves in an ellipse where a force which is always directed towards the center focus, directed towards the focus. To find law of force which is दूसरी दी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, तीसरी पीरियोडिक टाइम। दी लॉ ऑफ फोर्स निकालने के लिए द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विद फोकस एज पोल इज एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा, where L is the semi-latus rectum and E is the eccentricity of the ellipse such that 0 less than c less than 1. Taking u equal to 1 by r, we have u equal to 1 plus e cos theta by L. Differentiating 1 with respect to theta, we get du by d theta is equal to minus e by L sin theta, and d2u by d theta 2 is equal to minus e cos theta by L. The differential equation of the central orbit is d2u by d theta 2 plus u equal to capital F by h square u square, where capital F is the central acceleration. capital F क्या है? Central acceleration है. Substituting the values from first and second and third. Substitute करो the values from first and second and third. We have capital F by h square u square equal to minus e cos theta by L plus 1 plus e cos theta by L, और कैपिटल F बटे h स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल 1 by L, और कैपिटल F इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर बटे L इक्वल टू लैम्डा बटे r स्क्वायर, वेयर लैम्डा इक्वल टू h स्क्वायर बटे L, और कैपिटल F इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर बाई L इक्वल टू लैम्डा बटे r स्क्वायर, वेयर लैम्डा इक्वल टू h स्क्वायर बटे L. लैम्डा क्या है? h स्क्वायर बटे L है. Hence the acceleration varies inversely as the square of the distance of particles from focus. Also the force is attractive as the value of F is positive. Force क्या है? Is attractive. Also the force is attractive as the value of F is positive. Second, velocity. The velocity of central orbit is given by v square equal to h square du by d theta का whole square plus u square, h square minus e sin theta by L का whole square plus 1 plus e cos theta by L का whole square इक्वल टू लैम्डा बटे L 1 प्लस, सिंप्लीफाई करो इसको,
1 plus e square plus 2e cos theta lambda to 1 plus e cos theta बटे l minus 1 minus e square बटे l simplified lambda to u है ये माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर बाई एल लैम्डा टू यू माइनस एल क्या होता है लेटस रेक्टम बी स्क्वायर बाई ए एंड 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पुट करो वैल्यूज लैम्डा टू ए माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर डिवाइड बटे एल क्या है बी स्क्वायर बाई ए hence v square is equal to lambda 2 by r पिडल फॉर्म में u to 1 by r होता है minus 1 by a where a is the length of the semi major axis of the ellipse. Equation 4 gives the velocity at any point of the ellipse and it depends upon the distance from the focus and independent of the direction of motion. Also v square less than 2 lambda by r. Equation 4 gives the velocity at any point of the ellipse and it depends upon the distance from the focus and independent of the direction of motion. Also v square is less than 2 lambda by r. The periodic time in a central orbit, the rate of description of the sectorial area is constant. In a central orbit, the rate of description of the sectorial area is constant and is equal to h by 2. If t is the time taken by the particle in describing the whole of the ellipse, then h by 2 into capital T equal to area of ellipse equal to pi ab. Therefore T equal to 2 pi ab बटे h. T किसके बराबर है 2 pi ab बटे h बराबर है 2 pi ab बटे अंडर रूट लैम्डा एल 2 pi ab बटे अंडर द रूट लैम्डा एल that is t equal to 2 pi ab अंडर रूट लैम्डा बी स्क्वायर बाई ए. ठीक, ये टाइम hence capital T equal to 2 pi into 2 pi alpha की पावर 3 by 2 by under root lambda. Thus the time period for one complete revolution is proportional to alpha की पावर 3 by 2 where alpha is the semi major axis. A है ये A is proportional to A की पावर 3 by 2 where A is the semi major axis. तो ये इलिप्टिक ऑर्बिट में हमने T निकाला कैपिटल T टाइम पीरियोडिक टाइम एक चीज़, वेलोसिटी निकाली दो चीज़, वी स्क्वायर लैम्डा 2 बाई आर माइनस 1 बाई आर और ला फोर्स निकाला. ला फोर्स क्या कहता है, पहली चीज़ ला फोर्स इलिप्टिक ऑर्बिट में क्या कहता है, एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम फोकस. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस inversely varies as the square of the distance of particle from focus. Also force is attractive as value of f is positive. Velocity निकाले जो v square equal to lambda 2 by r minus 1 by a where a is the length of semi major axis. Equation 4 gives the velocity at any point of the ellipse and it depends upon the distance
from the focus and independent of the direction of motion. Independent है of the direction of motion, hence also v square, this is v square less than 2 lambda बटे r. पीरियोडिक टाइम निकाला, t क्या होता है 2 पाई ए बी बटे h. If t is the time taken by particle in describing the whole of the ellipse, if in a central orbit the rate of description of the sectorial area is constant, ये हमने किया था, and is equal to h/2, ठीक. And if t is the time taken by the particle in describing the whole of the ellipse, then h/2 across t equal to area of ellipse, sectorial area equal to pi a b होता है area of ellipse. तो t equal to 2 pi a b बटे h. अब h की वैल्यू क्या आती है 2 pi a b अंडर द रूट लैम्डा l. therefore t equal 2 pi a b under the root lambda l. l क्या होता है b square by a, lattice rectum, semi lattice rectum. t hence t equal to 2 pi a की power 3 by 2 under root lambda. Thus the time period for one complete revolution is proportional to a की power 3 by 2, where a is the semi-major axis. Hyperbolic orbit. A particle moves in a hyperbola under a central force which is always directed towards its focus. To find the law of force 1. Second, the velocity at any point of its path. Second. Third, the periodic time. A particle moves in a hyperbola. Particle कहता है मूव कर रहा है, moves in a hyperbola under a central force which is always directed toward its focus. To find the law force 1. The velocity at any point of its path. 2. The periodic time. 1. Law force. The polar equation of the hyperbola referred to focus as pole is L by R is equal to 1 plus e cos theta. L बटे R क्या है 1 plus e cos theta, where L is semi-lattice rectum and E is the eccentricity of hyperbola, such that E is greater than 1. Putting 1 by R equal to U, we get U is equal to 1 plus e cos theta by L. Hyperbolic orbit. Differentiate 1 with respect to theta. d by d theta ये आ गया माइनस e sin theta बटे L. Again differentiate it, d to u by d theta 2 equal to minus e cos theta बटे L. The differential equation of central orbit is d to u by d theta 2 plus u. ये f बटे h स्क्वायर u स्क्वायर होती है, where capital F is the central acceleration. Substituting the value from 1 and 2 in 3, we get capital F बटे h स्क्वायर u स्क्वायर equal to minus e cos theta बटे L plus 1 plus e cos theta बटे L. d to u by d theta 2 की वैल्यू पुट करो u की और इसको सिंप्लीफाई करो 1 by L, तो f इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर बटे L हो गया इक्वल टू लैम्डा u स्क्वायर, where lambda equal to h square बटे L.
और F इक्वल टू लैम्डा बटे आर स्केयर। F क्या है? लैम्डा बटे आर स्केयर हो गया। तो फोर्स is proportional to 1 by r square. Hence the acceleration varies inversely as square of the distance of the particle from the focus. Also force is attractive as value of F is positive. Attractive force है। अब नेक्स्ट वेलोसिटी निकालते हैं। द वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर यू का वैल्यू रखो यहाँ 1 प्लस ई कॉस थीटा बटे एल का होल स्क्वायर। डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू रखी ई स्क्वायर बटे एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच स्क्वायर क्या है? लैम्डा एल है। तो ये 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ई कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एल स्क्वायर एलसीएम आ गया। लैम्डा एल 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस थीटा बटे एल स्क्वायर। लैम्डा 1 प्लस ई स्क्वायर बटे एल प्लस 2 ई कॉस थीटा बटे एल इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस ई स्क्वायर बटे एल प्लस 2 यू माइनस 1 बाई एल। लैम्डा कॉमन है 2 यू प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बाई एल। लैम्डा 2 बाई आर प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बाई एल। If 2a, 2b are lengths of transverse and conjugate axes and L is the semi-lattice rectum of hyperbola, then L बराबर है v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ए इक्वल टू ए ई स्क्वायर माइनस 1। Therefore ई स्क्वायर माइनस 1 बाई एल इक्वल टू 1 बाई ए। 5 है 4 है। फ्रॉम 4 and 5 we have v square equal to lambda 2 by r plus 1 by a, which gives the velocity of the particle at any point of its path, and v square greater than 2 lambda by r, which gives the velocity of the particle at any point of its path and v square greater than 2 lambda by r. Periodic time, if t, let t be the time taken by the particle in describing the whole of the hyperbola. Let t क्या है? With the time taken by the particle in describing the whole of the hyperbola, and h by 2 is the area described in unit time, then t गुणा h by 2 इक्वल टू एरिया ऑफ द हाइपरबोला इक्वल टू पाई ए वी। तो t इक्वल टू 2 पाई ए वी बटे h, 2 पाई ए वी बटे अंडर रूट लैम्डा एल। देयरफॉर t इक्वल टू 2 पाई ए वी अंडर रूट लैम्डा बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। t इक्वल टू 2 पाई ए की पावर 3 बाई 2 under root lambda. Thus the time period for one complete revolution is proportional to a की power 3 by 2, where 2a is length of transverse axis. Time period ये आ गया 2 पाई a की power 3 by 2 बटे under root lambda. Thus the time period for one complete revolution is proportional to a की power 3 by 2, where 2a is the length of transverse axis. Parabolic orbit focus as center of the circle. Parabolic orbit focus as center of the force. Focus को आप center of the force लेंगे. A particle moves in a parabola under a force which is always directed towards the focus. To find the law of force,
the velocity at any point of its path, the law force, the velocity at any point of its path, the periodic time. So you can do on the similar lines, you can find periodic time, velocity and law force. As in the case of hyperbola, ellipse, you can also find parabolic orbit. Now velocity in a circle. The velocity in a circle at any point of the central orbit is the velocity necessary to describe a circle passing through that point and with center as center of force associated with the orbit. This is the circle. P is particle on the circular path. F is the force of attraction. O is the focus. OP equal to R, and at P velocity along tangent is B. The velocity in a circle at any point of the central orbit is the velocity necessary to describe a circle passing through that point and with center as at the center of the force associated with the orbit. ठीक, इसको प्रूव करना. टेक द सेंटर ऑफ फोर्स O as the pole. Let F central acceleration at any point P of the orbit directed towards O where OP equal to R. Let V क्या है, velocity है in a circle at point P. Since radius vector OP is normal to the circle at P, so central radial acceleration equal inward normal acceleration. इसलिए जो सेंट्रल रेडियल एक्सेलरेशन बराबर है इनवर्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन, और दैट इज कैपिटल F इक्वल टू V स्क्वायर बाई रो इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, और V स्क्वायर इक्वल टू RF. Thus in moving under a central attractive acceleration capital F, the velocity in a circle of distance A from the center of force is given by V square equal to A capital F R बराबर A. Next is to determine the orbit when the law of central forces is given. Orbit determine करना है when the law of central force is given. A particle moves in a plane under a central force which varies inversely as square of the distance from the fixed point to find the orbit. Since the force is directed towards a fixed point, force क्या है, fixed point के towards directed है, therefore the path is the central orbit. Definition central orbit की. Also the force is varying inversely as square of the distance of particle from the center. The F can be written as mu by R square. Using the pedal form of differential equation of the orbit, भी है pedal form क्या होती है, h square बटे p क्यूब dp by dr इक्वल टू f, और h स्क्वायर बटे p क्यूब dp by dr f की वैल्यू म्यू बाई आर स्क्वायर, और -2h स्क्वायर बटे p क्यूब dp इक्वल टू वेरिएबल को सेपरेट, p को अलग करो r को अलग करो, -2 म्यू बटे आर स्क्वायर dr. Integrating both sides we get h square बटे p square equal to 2 mu बटे r plus c, which is the required orbit. ये orbit की to determine the orbit
when the law of central force is given। ठीक है, तो ऑर्बिट की इक्वेशन क्या होगी, एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर टू म्यू बटे आर प्लस सी। थ्योरम है शो दैट ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर ए central attractive force bearing directly as the distance is an ellipse। ellipse होता है having its center at the center of force and conversely। क्या शो करना हमने, थ्योरम क्या है, show that the orbit described under a central attractive force, an orbit described under a central attractive force bearing directly as the distance is an ellipse। ellipse की जैसे डिस्टेंस हो, having its center at the center of force and conversely। तो proof इसका, it is given that central force is bearing directly as the distance, bearing directly as the distance। तो F सेंट्रल फोर्स है, बेरिंग डायरेक्टली वेरी करे एज द डिस्टेंस, म्यू आर हो गया। तो F इक्वल टू म्यू आर विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ओ टेकन एज पोल। तो द पीडल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज एच स्क्वायर बटे पी क्यूब डी पी बाई डी आर इक्वल टू एफ। तो एच स्क्वायर बटे पी क्यूब डी पी, डी आर को राइट हैंड साइड एफ की वैल्यू रख दी, म्यू आर डी आर, और इंटीग्रेटिंग तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे टू पी स्क्वायर हो गया, म्यू आर स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और एच स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर म्यू बटे पी स्क्वायर इक्वल माइनस म्यू आर स्क्वायर माइनस टू सी, माइनस इधर ले गया राइट हैंड साइड में, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर म्यू से डिवाइड करो, माइनस आर स्क्वायर माइनस टू सी बाई म्यू, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर सी वन माइनस आर स्क्वायर, वेर सी वन इक्वल टू टू सी बटे म्यू, और इससे क्या हो गया, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर इक्वल टू आर, सी वन क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वेर सी वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो विच इज द पीडल इक्वेशन टू एन इलिप्स रेफर्ड टू इट्स सेंटर एज ओरिजन। पीडल इक्वेशन है इलिप्स की ये, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कन्वर्सली when the orbit is an ellipse in pedal form referred to its center as origin is ए स्क्वायर पी स्क्वायर, कन्वर्स उल्टा ले चलो इसको बस, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बट पी क्यूब इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, डिफ्रेंशिएट करो विद वन विद रिस्पेक्ट टू आर, माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी क्यूब डी पी बाई डी आर, पी क्यूब हो गया ना, ऊपर ले गए पी की पावर माइनस टू, और इधर माइनस टू रह गया सिर्फ, विद रिस्पेक्ट टू आर करते हैं। और डी पी बाई डी आर इक्वल टू पी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यूजिंग द रिजल्ट बी स्क्वायर बटे पी क्यूब एच स्क्वायर बटे पी क्यूब डी पी बाई डी आर इक्वल टू एफ, यूजिंग द रिजल्ट एच स्क्वायर बटे पी क्यूब डी पी बाई डी आर इक्वल टू एफ, वी हैव कैपिटल एफ इक्वल टू एच स्क्वायर पी क्यूब गुणा पी क्यूब आर डिवाइड बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डेट इज एफ इक्वल टू म्यू आर, वेर म्यू इक्वल टू एच स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, विच शोज डेट फोर्स वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस। इससे शो क्या हो रहा है, डेट फोर्स वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस, एफ इक्वल टू म्यू आर।
the ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ऊपर वाला। अब कुछ हम समराइज करते हैं जो कुछ किया हमने। पहला क्या, पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू इक्वल टू एफ बटे एच स्क्वायर यू स्क्वायर, वेर यू इक्वल टू 1/r। सेकेंड, पीडल फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज एच स्क्वायर बटे पी क्यूब डी पी बाई डी आर इक्वल टू एफ। तीसरा, फॉर सेंट्रल ऑर्बिट ए आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एच कॉन्स्टेंट इक्वल टू पी वी। सेंट्रल ऑर्बिट के लिए टी टाइम जो है 1/h इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी थीटा। वेलोसिटी निकालने के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। पीडल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट एच स्क्वायर बटे पी क्यूब डी पी बाई डी आर इक्वल टू एफ। फॉर सेंट्रल ऑर्बिट्स वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर एंड हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ डी आर बाई डी सी। Dear students, you can view this lecture online using college website www.bljscollege.com at a college channel. If and still if there is any problem, any difficulty, any question, you may ask to me. Thank you. We will meet in the next lecture.